Good morning, students. I hope you all are fine and studying sincerely at home. So, let's start with Chapter 1 Number Systems Part 4. Part 1, Part 2, and Part 3 we have already discussed in our previous classes. So, let's start. These are some of the new topics that we are going to discuss in our today's class, but before that, we will do a quick revision of previous topics. Octal number system, conversion of decimal to octal numbers, conversion of octal to decimal numbers, hexadecimal number system, conversion of decimal to hexadecimal numbers, conversion of hexadecimal to decimal numbers. So let's take our first topic for revision, that is octal number system. As I told you before also that it is an another type of number system. It uses 8 as the base. It consists of 8 digits 0 to 7. If we count 0 to 7, then we have total 8 digits. It is represented as base 8. Base 8 means if a number has a base 8, then that number is an octal number. It has two types of conversions. It converts decimal number to octal numbers and it converts octal number to decimal numbers. So let's take first example of how to convert decimal number to octal numbers. Now in this we see that we have taken this example before also, but once again I have taken this example so that it is easily understood to you. Now, in this we have taken 569 is a decimal number. We have taken 8 because 8 is a octal base. So we will divide 569 by 8. So we get all these remainders here. And we will divide 569 by 8 until we get 0 in the end. So come on to the right hand side, we see that 569 is divided by 8 and we get 71 as the quotient and 1 as the remainder. We write this quotient here and we write remainder here. Now in the next we take 71 here, we divide by 8, we get 8 as the quotient here and we write 7 as the remainder here. Now we keep on dividing until we get 0. Now if we see the answer, in the answer, we will write from bottom to top remainders. First we write 1, then 0, then 7, then 1. You see here we have written 569, that is a decimal number with base 10 on the left hand side, equals to, we have written 1071 here with base 8. This is how we convert decimal number to octal numbers. Now next we have the same conversion, how to convert decimal to octal numbers. We have another example. In this we have taken 428 as a decimal number. We make a table with 3 columns: divisor, quotient and remainder. In this again we will divide 428 by 8 until we get 0 in the end. On the right hand side we get remainders as 4, 5 and 6. Now if we see the answer, here, we write 428, that is a decimal number on the left hand side with base 10, equals to, we will write 654 from bottom to top, base as 8, that is octal number. How we have written? We have written first 6, then 5, then 4 in the answer. So I hope both the examples are clear to you, that how we convert decimal to octal numbers. Now next conversion is how to convert octal number to decimal number. In this we use multiplication method. We make a table like this with 4 columns: digit, power of base, calculation and product. Now in this we take 1034 as an octal number and we will write it from right to left in the digit column. First we will write 4, then 3, then 0, then 1. In power of base, we will use 8 as a base and 0 to 3 we will use powers. Now in calculation, we will multiply 4 into 8 to the power 0. 8 to the power 0 has a value 1, so we will multiply 4 into 1 equals to 4 as a product. Now next we multiply 3 into 8 to the power 1 here. 8 to the power 1 has a value 8, so we will multiply 3 into 8 and we get 24 as the product. Now we keep on multiplying all these and at the last we will get total as
540. So we will write here on the left hand side, we will write 1034 as the octal number, and on the right hand side we will write 540 that we obtained with base 10. So this is how we convert the octal number to the decimal number. I hope this example is clear. Now, next we have hexadecimal number. This is our new topic. So this is another type of number system. It uses 16 as the base. It has 16 symbols that consists of 0 to 9 digits and A to F alphabets. इसके अंदर 0 to 9 digits होते हैं और A to F alphabets होते हैं. जैसे हम 0 to 9 काउंट करते हैं, 9 के बाद आता है 10, तो A to F इनको हम वैल्यूज़ देते हैं. जैसे A की वैल्यू 10, B की 11, C की 12, D की 13, E की 14 एंड F की 15. इन सब अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ होंगी. यू कैन सी हियर. सी A की वैल्यू 10, B की 11, C 12, D 13, E की 14 एंड F की 15. सो जैसे हम 0 to 9 तक काउंट करेंगे, उसके बाद हम इन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर देंगे 10 से 15 तक की वैल्यूज़. सो इन दिस वी रिप्रेजेंट इट एज बेस 16. अगर कोई नंबर के नीचे बेस 16 है, दैट मीन्स वो हेक्साडेसिमल नंबर है. सो लेट्स टेक फर्स्ट conversion, that is how to convert decimal to hexadecimal number. For this we use division method, जैसे हमने octal number में यूज़ किया था. इसके अंदर अगेन हम डेसिमल नंबर लेंगे, उसे बेस 16 से तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक एंड में ज़ीरो नहीं आ जाता, और हम रिमाइंडर्स को राइट हैंड साइड पे लिखेंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप. नेक्स्ट हम आंसर इस फॉर्म में लिखेंगे. पहले हम लेफ्ट साइड पे डेसिमल नंबर लिखेंगे बेस 10 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे हम लिखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर और बेस देंगे उसको 16. सो दिस इज हाउ वी फॉलो द प्रोसेस टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल numbers. Let's take an example. In this we see that how we convert decimal number to hexadecimal number. Suppose we have 1567 is a decimal number. We will make a table with 3 columns: divisor, question and remainder. You have to follow this type of table. Here we will take 1567 and we will divide it by 16 until we get 0. हम इस नंबर को 16 से डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमें लास्ट में 0 नहीं मिल जाता. राइट साइड पे हमारे रिमाइंडर्स आ रहे हैं 15, 1 एंड 6, बट 15 हम ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, हम इसे अल्फ़ाबेट के फॉर्म में लिखेंगे. सो 15 किसकी वैल्यू है? F की. सो वी हैव रिटन 15 इक्वल्स टू F. जब हम आंसर की तरफ आएंगे तो आंसर में हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड पे हमने डेसिमल नंबर लिखा 1567 बेस 10 इक्वल्स टू हमने राइट साइड पे बॉटम टू टॉप लिखा. हाउ? पहले लिखा 6, फिर 1 और 15 की जगह हम लिखेंगे F. Here you can see 6, 1, F base 16. So this is how we convert decimal number to hexadecimal number. So next we have how to convert hexadecimal to decimal numbers. इसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे जैसे हमने ऑक्टल नंबर में किया था. 4 कॉलम्स बनाएंगे टेबल में: डिजिट, पावर ऑफ बेस, कैलकुलेशन एंड प्रोडक्ट. फिर हम उस ऑक्टल नंबर को राइट टू लेफ्ट डिजिट कॉलम में लिखेंगे. लिखने के बाद हम हर डिजिट को बेस 16 के साथ और उसे पावर 0 से देते हुए मल्टीप्लाई करेंगे. लास्ट में हम जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम ऐड करके नीचे टोटल नंबर लिख देंगे. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इसके अंदर हम इस फॉर्म के अंदर आंसर लिखेंगे. हेक्साडेसिमल लेफ्ट हैंड साइड पे बेस 16 इक्वल्स टू डेसिमल नंबर राइट हैंड साइड पे बेस 10 लिखेंगे. सो हम एग्जाम्पल देखते हैं कैसे हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल को डेसिमल नंबर के अंदर. सो लेट्स सी. हियर हमने यहाँ पे 1 to E बेस 16 एक हेक्साडेसिमल नंबर लिया है. इसे हमें डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है. तो कन्वर्ट करने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे. अगेन हम 4 कॉलम्स लेंगे: डिजिट, पावर ऑफ बेस, कैलकुलेशन एंड प्रोडक्ट. नाउ अब हमारा यहाँ से हम नंबर लेंगे राइट टू लेफ्ट. तो राइट में हमारे हैं E,
तो हम ई नहीं खाली लिख सकते, तो हम ई की वैल्यू लिखेंगे दैट इज़ 14। फिर 14, फिर हम लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे हम 1, राइट टू लेफ्ट चलेंगे डिजिट कॉलम में। फिर पावर और बेस के अंदर हम बेस लेंगे 16 और उसे पावर्स दे देंगे 0 to 2 तक। फिर हम कैलकुलेशन में आएंगे तो हम 14 इंटू 16 टू द पावर 0 करेंगे, तो 16 टू द पावर 0 की वैल्यू होगी 1, तो हम 14 इंटू 1 इक्वल्स टू प्रोडक्ट में लिखेंगे 14। इन द सेम वे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे हम उसे ऐड कर देंगे टोटल के सामने। हमारा प्रोडक्ट आया 302, तो हम उसे आंसर में कैसे लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे हेक्साडेसिमल 1 2 ई बेस 16 और उसे हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? डेसिमल में। तो हम लिखेंगे 302 बेस 10, क्योंकि हमारा टोटल आंसर के अंदर आया है 302। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। So our chapter is over today. Do all the exercise given at the back of the chapter in the book and start revision of this chapter as your exams are coming. Thank you. Stay safe and stay healthy.